draw this on a rectangular wall surface. अब हमें क्या करना है, वन टू कंप्लीट कीजिए, कंप्लीटेड। जो हमारा कुछ ऐसा है, आई होप यू ऑल कैन सी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज मैच द पिक्चर टू द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द शेप। इसमें हमें क्या करना है, जो पिक्चर जिस डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही है हमको उसको यहाँ पर नाम देना है। फर्स्ट वन से आई हैव 5 फेसेस एंड 5 कॉर्नर्स। एक ऐसी फिगर है जिसके 5 फेस हैं, 5 कॉर्नर है और 8 एजेस हैं। एक फेस क्या है, स्क्वायर है, और 4 फेस क्या है, रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगी और स्क्वायर करेंगे। The answer to this question is perfect. Second, I have one flat face, one curved face and one edge. एक फ्लैट फेस है, एक कर्व फेस है और एक ही एज है। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहेंगे, कोन। नेक्स्ट, आई हैव वन कर्व फेस एंड नो एजेस और कॉर्नर्स। तो एक ही फेस है, वो भी कर्व है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ स्फीयर। The answer to this question will be a sphere. Next, I have two flat faces, one curved face and two edges. I have no corners. कौन सी ऐसी फिगर जिसके दो फ्लैट फेस हैं, एक कर्व फेस है और दो एजेस हैं? तो ऑब्वियसली आई कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सिलेंडर। I have 5 faces, 6 corners and 9 edges and 2 of my faces are triangles. ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट, आई हैव 6 faces, 12 edges and 8 corners. 6 फेस हैं, 12 एजेस हैं, 12 किनारे हैं एंड वी हैव 8 कॉर्नर्स, 8 कोने हैं। तो दिस फिगर इज गोइंग टू बी ईदर अ क्यूब और अ क्यूबॉइड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट टू द एप्रोप्रिएट सॉलिड गिवन बिलो। हमको इसको मैच करना है। द फर्स्ट वन, what is the first figure that is resembling? So I can say it is resembling, what can you say? So it is resembling which figure? I think this is representing this first one. Then this is a triangle and this is representing the first figure. Then it is a prism, so it is going to resemble the fourth figure, and then this is a cylinder which will resemble the second figure. Next, which of these next can be folded to make a solid? अब हम क्या कर रहे हैं, we are folding it to make it a solid shape. So what will be the answer to this? C. The very which of these next can be folded to make a solid of the kind given below? We are making it as a cuboid. Then this can be folded to give a cylinder. This is giving a triangular prism. This is giving a rhombus. Okay. Next, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
वी आर ट्राइंग टू मेक एंगल। जब दो लाइन्स एक दूसरे से मिलती हैं तो व्हाट डू वी गेट एन एंगल। यहाँ पर जैसे आप फिगर्स देख पा रहे हैं, ये मैन योगा कर रहा है, ही सिटिंग इन अ posture, which is again making an angle. Then this is another angle, this is also an angle, then one angle is this way, this is another angle, and then you have another angle. So we have been provided here with this information. अब हमें क्या करना है, let's see. One second. ना यहाँ पर क्या करना है, हमें एंगल्स मार्क करने कौन सा बना है. So if you look at the very first figure, I am giving you the solution here. For the very first figure, that is A, we are getting this angle and we are getting this angle. So we are getting four angles basically, and we need to mark these angles. Then here we are getting one angle this way and one angle this way, and this one also another angle. Then here we have this angle, then here we can get this angle and this angle, and this is also 180-degree angle. Then 1, 2 and 3. I hope this is also clear to you all. Next part. Where do you see angles in the classroom? So this is something which you have to analyze and check. Okay. Next. Right angle. Right angles कौन से होते हैं बच्चों? When we get a 90-degree angle, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे से आकर के इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक हॉरिजॉन्टली इंटरसेक्ट कर रही है, एक वर्टिकली, तो हम क्या कहेंगे कौन सा एंगल बना है, 90-डिग्री एंगल. यहाँ पर हमें क्या करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई विच एंगल्स आर राइट एंगल. आइडेंटिफाई द एंगल दैट यू थिंक आर राइट एंगल and circle them in the dot grid given below. So this is the right angle, this is a right angle, this is also a right angle, and this is also right angle. बाकी सब right angles नहीं है. You need to draw some right angles on the dot grid. So one I am showing you, you can draw it in any way. You can draw it like this, or you can draw it like this. All these are right angles which you can draw. Then acute and obtuse angles. Acute angles क्या होते हैं? Angles which are less than a right angle. 90-डिग्री एंगल हमारा राइट एंगल होता है, उससे कम है, ये 90 डिग्री था, इससे जो अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, जो इससे कम है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, अक्यूट. ऑब्ट्यूज क्या है, ये हमारा 90 डिग्री की लाइन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री. ये देखिए एंगल इससे बड़ा है, ये क्या है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है. क्लियर? आई होप अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज आपको समझ में आ गया. We'll move on to the next. Draw some acute angles and draw a line to make an acute angle using each given line in the bottom grid. Okay. तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है? We have to make an acute angle. So one acute angle you can draw. This is one acute angle that I have drawn. Then this and then this can be considered as a 90-degree line, and this is one obtuse angle that we have drawn. Okay. Next. यहाँ पर आपको मार्क करना है acute angles in red, right angles in green, and obtuse angles in blue.
So let's mark it. One I'm showing you, rest you will do on your own. Okay. So this angle which you can see, this is an acute angle. Then this is also an acute angle. This angle is an obtuse angle. Similarly, here also you have to draw here, here, here. So this is something which you have to draw on your own. By far I have taught you. Now this is something which is an activity which you will do on your own. देखो, अभी तक हम लोगों ने जितना भी शेप्स में पढ़ा है वो सारी इंफॉर्मेशन से आई थिंक यू कैन मेक हियर 3 और 4 साइडेड शेप्स आप आराम से बना सकते हो. 4 साइडेड शेप क्या हो गया आपका स्क्वायर, 3 साइडेड शेप आपका क्या हो गया ट्राइंगल, और भी कई सारे शेप्स आप बना सकते हो. एंड यू हैव टू गेट दैट दे शुड हैव एटलीस्ट 1 और मोर राइट एंगल. ये वाला राइट एंगल है, इसमें देखो राइट एंगल्स बने. तो जो जो शेप्स आप बना रहे हो जिसमें राइट एंगल्स आ रहा है यू हैव टू सर्कल इट. I hope this is something which you can do. Now, this is also an activity. इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है. This is also an activity that you have to do. Okay? ये सब आपके एक्टिविटी पेजेस हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है which will be a part of the syllabus and which will come in the exam. Okay? So thank you.